Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jai Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar Radhe, Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jai Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jai Gaur Nitai, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Bol Premanande Hari Bol, Jagat Pati Srila Prabhupada ki Jai, Anant Krishna Prabhu ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. We have just shared the quiz link. We request everyone to please go ahead and finish the quiz. This quiz is basis the yesterday's class. Meanwhile, Anupama Mataji, Hare Krishna. Yes, Guruji. Mataji, you can do Kirtan for another 2-3 minutes. We have time. So you can just do Hare Krishna Mahamantra directly. And other devotees, please give the quiz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav Radha. Jai Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai. Jai Gaur Nitai. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Srila Prabhupada teach Nanpuri Vaishnava. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. So today, devotees, we have Meenakshi Radha Mataji, and she will lead the class today. Mataji, you can share. So we are going to start from first canto, chapter 5th, and text 14. Till yesterday, we completed 1-5-1-3. Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm so bad in Sanskrit. So anybody like to read the Sanskrit part? So we can start. So before that, we just do the Mangla Charan to start with the Srimad Bhagavatam. To just pray to the Lord, to the Vaishnavas and to Srila Prabhupada, so that we can understand, we can study this Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Just a minute. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Nashtu Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavati Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatare Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. So this is a chapter about Narad Muni instructing the Vyasadeva for
writing a Srimad Bhagavatam, inspiring him to write a Srimad Bhagavatam. So we're just starting from a stroke number 14. Yes, Ankur Prabhu. Mataji, can you scroll up a bit? Tato anyatha kinchana yad vivakshata prathag drishas tatkrita rupa namabhibi na karhichit kwa api cha duhstitha matir labheta vata hata naur iva ivaspadam. Prabhuji can continue with this. I Ji just Mataji. scrolled up. Yeah, actually I have not opened it separately, so synonyms. Tatah, from that, anyatha, apart, kinchan, something, yat, whatsoever, vivakshata, desiring to describe, prathak, separately, drisha, vision, tatkrita, reactionary to that, rupa, form, namamibhi, by names, namabhi, by names, na karhichit, never, qua api, any, cha, and duhastitha, mati, oscillating mind, labheta, gains, vata ahata, troubled by the wind, nauh, boat, iva, like, aspadam, place. Translation: whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. Purport: Sri Vyasadeva is the editor of all descriptions of the Vedic literatures, and thus he has described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic power, and devotional service. Besides that, in his various Puranas, he has recommended the worship of so many demigods in different forms and names. The result is that people in general are puzzled how to fix their minds in the service of the Lord. They are always disturbed about finding the real path of self realization. Srila Narada Deva is stressing this particular defect in the Vedic literatures compiled by Vyasadeva, and thus he is trying to emphasize describing everything in relation with the Supreme Lord and no one else. In fact, there is nothing existent except the Lord. The Lord is manifested in different expansions. He is the root of the complete tree. He is the stomach of the complete body. Pouring water on the root is the right process to water the trees, as much as feeding the stomach supplies energy to all parts of the body. Therefore, Srila Vyasadeva should not have compiled any Puranas other than Bhagavata Puran, because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. If a slight deviation can create such havoc, then what to speak of deliberate expansion of the ideas separate from the absolute truth personality of Godhead? The most defective part of worshipping demigods is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of the principles of the Bhagavatam, which alone can give the accurate direction for self realization in eternal relation with the personality of Godhead by devotional service in transcendental love. The example of the boat disturbed by whirling wind is suitable in this respect. The diverted mind of the pantheist can never reach the perfection of self realization due to the disturbed condition of the selection of object. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. सो इस श्लोक में बेसिकली ये चैप्टर जो है, इससे पहले क्या सिचुएशन थी कि जो व्यासदेव है उन्होंने बहुत सारे जो है सब पुराणास वगैरह सब लिख लिए,
और जो भी सारे वेदास है उन्होंने लिख लिया, बट स्टिल ही इज कंफ्यूज। वेदांत सूत्र भी लिखा इवन, तो बट स्टिल ही इज कंफ्यूज्ड एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द हार्ट। देन जो उनके गुरु हैं, गुरु महाराज है जो उनके, नारद मुनि आते हैं, एंड देन वो उनको समझाते हैं या बताते हैं कि व्हाई ही इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना। और उसमें इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर वैसे ही लोग इतने डिस्टर्ब है और इतने डाइवर्टेड है, और अगर हम इतना कुछ उनको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका माइंड और एजिटेट हो जाएगा। बिकॉज अब वो समझा रहे हैं व्यासदेव को कि जितनी भी आपने चीजें लिखी हैं ग्लोरिफिकेशन की लॉर्ड की, वो इनडायरेक्ट है, कोई भी डायरेक्ट नहीं है। जितने भी वेदास और जितने भी सब चीजें हैं, कहीं पर भी डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन नहीं है। इसलिए अब उनको वो इंस्पिरेशन देंगे कि ही राइट अ श्रीमद, सो दैट ही कैन राइट अ श्रीमद भागवतम, व्हिच इज एक्चुअली अ डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। और फिर जैसे इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इतनी डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है दे आर नॉट एबल टू गो टू द राइट पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ही वॉक क्रिएट कर रहा है। हम देख सकते हैं इस टाइम पे जो है स्पेशली सो कॉल्ड हिंदुइज्म, जो कि नॉट अ राइट वर्ड आल्सो टू यूज, जो है इतना डाइवर्टेड है कि अरे आप लोगों की तो 33 करोड़ देवी देवता है, बट दे डोंट नो एक्चुअल थिंग ना। दे वर सो डाइवर्टेड। इवन जो भगवत गीता में भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि अगर तुम्हें मुझे समझना है तो अब जो इन वेदास की फ्लावरी लैंग्वेज है, अगर उसको समझने लगोगे तो उसमें फंस जाओगे और मुझे नहीं समझ पाओगे। तो अगर तुम्हें मुझे समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली मी द सुप्रीम लॉर्ड बेसिक। तो इसमें प्रभुपाद जो है इस श्लोक में वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सबको इतने डेमीगॉड्स को फॉलो कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे सेक्रेटरीज क्रिएट हो गए हैं, बट जो एक्चुअल पाथ है वो लॉस्ट हो गया है। और यहाँ पर इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं द एग्जाम्पल ऑफ बोट डिस्टर्ब्ड बाय द विलिंग ऑफ विंड इज सुटेबल इन दिस रिस्पेक्ट। कि जैसे विंड है, विंड का क्या काम होता है कि विंड जहां आप लोग, अगर जो बोट है वो कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा, जहां पर ही हवा बहेगी वो जो बोट है वहीं बहना शुरू हो जाएगी। तो आजकल जो सबकी सिचुएशन है वो यही है कि जहां पर भी जो होता है, अच्छा ये इससे हमें ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाती हैं, हमारी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हम ये फॉलो करने लग जाते हैं। फिर नहीं नहीं, ये तो अब चीजों को सेटिस्फाई नहीं करा, फिर हम वो फॉलो करने लगे। तो यहाँ पर वो जो है नारद मुनि वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोग क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिस तरीके से एक बोट डिस्टर्ब है, एक हवा चल रही है और उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं उसको, बोट को एक माइंड से कंपैरिजन कर। So we just move on to the next shlok number 15, sorry. Yes, Anupama Mataji, you can read the next. Can you scroll a little? Yes, ma'am. जुगु उपस्थितं धर्म कृते नुशास्तः स्वभारत्रत्यस्य महान् व्यक्तिक्रम यथा कत्यो धर्म इति ततः स्थितो न मन्यते तस्य निवारण जना। Synonyms. Yes. Jugupstitam, really condemn, dharma prate, for the matter of religion. Sastah, instruction. Swabhava raktasya, naturally inclined. Mahan, great. Vyatikramaha, unreasonable. Yat vakyata, under whose instruction. Dharma, religion. Iti, it is thus. Itraha, the people in general. Sthita, fixed. No, no more. Manyate, think. Tasya, of that. Nivaranam, prohibition. Jana, they. Translation. The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is really condemned and is quite unreasonable. Because they are guided under your instructions, they will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibition. Purport. Sri Vyasadeva compilation of different Vedic literature on the basis of regulated performance of fruitive activities as depicted in the Mahabharata and other literatures is condemned herewith by Srila Narad.
The human being, by long material association, life after life, have a natural inclination by practice to endeavor to lord it over material energy. They have no sense of responsibility of human life. This human life of this human form of life is a chance to get out of the clutches of illusionary matter. The Vedas are meant for going back to Godhead, going back home, to revolve in the cycle of transmigration in a series of life numbering 84 lakhs is a imprisoned life for the condemned conditioned souls. The human form of life is a chance to get out of this imprisoned life. Can you hear me from Madhu? Ji Mataji, we Yes, can mother. hear. Yes. Okay. Somebody wrote no audio. As such as only under the, sorry, where I was. The human form of life is a chance to get out of this imprisoned life. And as such, the only occupation of the human being is to reestablish his lost relationship with God. Under the circumstances, one should never be encouraged in making a plan for sense enjoyment in the name of religious function. Such division of the human energy results in a misguided civilization. Srila Vyasadeva is the authority in Vedic explanation in the Mahabharata, etc., and his encouragement in sense enjoyment in some form or other is a great barrier for spiritual advancement because the people in general will not agree to renounce material activities which hold them in material bondage. At a certain stage of human civilization, when such a material activities in the name of religion as in the name of religious as sacrificing animal in the name of yaga were too much rampant. The Lord incarnated himself as Buddha and decried the authority of the Vedas in order to stop animal sacrifices in the name of religion. This was foreseen by Narad, and therefore he condemned such literature. The flesh eaters still continue to perform animal sacrifices before some demigods or goddess in the name of religion, because in some of the Vedic literature and such regulated sacrifices are recommended. They are so recommended to discourage flesh eating, but gradually the purpose of such religion activities is to forgotten and the slaughterhouse become prominent. This is because foolish materialistic man do not care to listen to others who are actually in a position to explain the Vedic rites. In the Vedas, it is distinctly said that perfection of life is never to be attained either by voluminous work or by accumulation of wealth or even by increasing the population. But it is so attained only by renunciation. The materialistic man do not care to listen to such injunctions. According to them, the so-called renounced order of life is meant for those who are unable to earn their livelihood because of some corporeal defects or for person who have failed to achieve prosperity uh, in family life. In histories like the Mahabharata, of course, there are topics on transcendental subjects along with material topics. The Bhagavad Gita is there in the Mahabharata. The whole idea of Mahabharata culminates in the ultimate instructions of Bhagavad Gita that one should relinquish all other engagement and should engage oneself solely and fully in surrendering unto the lotus feet of Lord Sri Krishna. But man with materialistic tendencies are more attracted to the politics, economics, and philanthropic activities mentioned in the Mahabharata that to the principal topic, namely the Bhagavad Gita. This compromising spirit of Vyasadeva is directly condemned by Narad, who advised him to directly proclaim that the prime necessity of human life is to realize one's eternal relation with the Lord and thus surrender unto him without delay.
A patient suffering from the particular type of malady is almost always inclined to accept eatables which are forbidden for him. The expert physician does not make any compromise with the patient by allowing him to take partially what he should not at all take. In the Bhagavad Gita, it is also said that a man attached to fruitive work should not be discouraged from his occupation, for gradually he may be elevated to the position of self-realization. This is sometimes applicable for those who are only dry empiric philosophers without spiritual realization, but those who are in the devotional line need not be always so advised. थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर जो है नारद मुनि डायरेक्टली जो है बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि जो भी आपने अभी तक लिखा है उससे क्या होगा कि जो है जो पीपल है दे विल डू लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, है ना, विच आर हार्डली केयर फॉर, और थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा, हार्डली केयर फॉर देयर प्रोविजन, जिसके अंदर प्रभुपाद जो है एग्जांपल देते हैं कि जो जैसे वेदास में रिकमेंडेड है एनिमल सेक्रीफाइसेस का, बट जो कलयुग में दैट इज प्रोहिबिटेड, बट स्टार्टिंग ऑफ कलयुग में क्या होने लगा, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन दे स्टार्ट कटिंग द एनिमल्स, है ना, लाइक काली पूजा होती है तो बलि चलाने के लिए करते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्योंकि ये प्रसाद है तो विल ईट देम। तो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उन्होंने वेदास का सपोर्ट लेकर, क्योंकि वेदास में मेंशन है तो हम कर सकते हैं, दे स्टार्ट डूइंग एन एनिमल किलिंग, जिसकी वजह से क्या है लॉर्ड बुद्धा को अपीयर होना पड़ा, एंड देन he has to say कि अब ये वेदास को आप एक्सेप्ट मत करिए, वेदास सही नहीं है ना। तो इसका कनेक्शन क्या है, तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि नारद मुनि वो देख रहे थे कि किस तरीके से जो लोग हैं आगे आने वाले कलयुग में जो वेदास को है वो गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे, तो इसलिए जो है जो बार बार इसका कंक्लूजन यही है कि वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ लिखिए जिसमें कोई भी चीज घुमा फिरा के नॉट डायरेक्ट हो। फिर उसमें एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं महाभारत का, कि महाभारत जो है व्यासदेव ने लिखी, और ऐसा कहा जाता है कि जो जो शूद्राज हैं, जो वुमेन्स हैं, जो ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो व्यासदेव जी हैं उन्होंने पुराणास और ये महाभारत लिखी, सो दैट दे आल्सो कैन अंडरस्टैंड इजीली, बिकॉज दे डोंट हैव अ मच ऑफ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और बट यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि लोग महाभारत तो पढ़ते हैं बट उसका जो मेन प्रिंसिपल है भगवत गीता उसको नहीं समझते हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो है मैसेज जो है लॉस्ट है, क्योंकि अगेन पूरी स्टोरी और स्टोरी के बीच में जो है भगवत गीता, और भगवत गीता इज द मेन प्रिंसिपल, है ना, बट जो है जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उसका मेन नहीं कर रहे, बट महाभारत के अंदर जो पॉलिटिक्स है ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छा पॉलिटिक्स समझना है तो आप महाभारत पढ़िए, सो दैट जो जो कृष्णा ने और बाकी लोगों ने पॉलिटिक्स करी है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर कैसे हम इकोनॉमिकल या फिलोसॉफिकल एक्टिविटीज जो महाभारत में मेंशन है उसको, मींस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मेन प्रिंसिपल इज द भगवत गीता व्हिच इज टेलिंग अगेन, प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग कि हाउ कैन यू टेक द बेस्ट बेनिफिट ऑफ योर ह्यूमन लाइफ, जो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है जो कि सो प्रीशियस है, एंड दैट इज ओनली मेंट फॉर योर एलिवेशन, और उसको क्या कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो है जो व्यासदेव जी ने कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखा है ऐसा नारद मुनि कैन सी, है ना, बिकॉज जो 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 भगवान के डिवोटीज होते हैं दे कैन फोरकास्ट में कि दूर का भी देख सकते हैं, फ्यूचर का भी। सो इसमें फिर प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं एक पेशेंट का, कि जो पेशेंट है वो उसको कुछ किसी चीज से अगर वो बीमार है, सपोज करो किसी का गला खराब है तो उसको बोला गया ठंडा नहीं खाना, वो नहीं खाना, बट उसका मन करता है खाने के लिए, बट जो एक्सपर्ट फिजिशियन है उसे पता है कि किस तरीके से जो है वो जो पेशेंट है इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, क्योंकि दैट इज देयर मोटिव कि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। सो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके लिए क्या जरूरी है कि हम फिर क्या कह रहे हैं कि इसलिए जरूरी है कि जो भी कार्य कर रहा है उसको हम मोटिवेट करें, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं in Bhagavad Gita it is said that the man attached to the fruitive work should be discouraged from his occupation, should not be discouraged from his occupation, for gradually he may elevate to the position of self realization. So जो व्यासदेव जी ने लिखे हैं वो इसी तरीके से लिखे गए हैं कि कर्म कांड, फिर कर्म कांड से ज्ञान कांड, एंड ज्ञान कांड से फिर उपासना कांड, और फिर उपासना कांड से आप भक्ति योग कर की तरफ ग्रेजुअली बढ़ते। सो यहाँ पर जो है जो
नारद मुनि उनको मोटिवेट कर रहे हैं किसके लिए, so that he can directly tell about the bhakti yoga. Hare Krishna. So next is Vrindavan Prabhu. You can read next. Hare Krishna Mata. Hare Krishna. Vichanosyarhati veditum vibhoranantaparasya nirvitat sukham pravartamanasya gunairanatmana satato bhavanadarsya chestitam vibho. Synonyms: Vichakshana, very expert; asya, of him; arhati, deserves; veditum, to understand; vibho, of the Lord; ananta parasya, of the unlimited; nivrittitaha, retired from; sukham, material happiness; parvartamanasya, those who are attached to; gunah, by the material qualities; anatmanah, devoid of knowledge in spiritual value; tatah, therefore; bhavan, your goodness; darshaya, show the ways; chestitam, activities; vibho, of the Lord. Translation: the Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality, retired from the activities of material happiness, deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. Purport: theological science is a difficult subject, especially when it deals with the transcendental nature of God. It is not a subject matter to be understood by persons who are too much attached to material activities. Only the very expert who have almost retired from materialistic activities by culture of spiritual knowledge can be admitted to the study of this great science. In the Bhagavad Gita, it is clearly stated that out of many hundreds and thousands of men, only one person deserves to enter into transcendental realization. And out of many thousands of such transcendentally realized persons, only a few can understand the theological science specifically dealing with God as a person. Shri Vyasadeva is therefore advised by Narad to describe the science of God directly by relating his transcendental activities. Vyasadeva is himself a personality expert in this science, and he is unattached to material enjoyment. Therefore, he is the right person to describe it. And Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, is the right person to receive it. Srimad Bhagavatam is the topmost theological science, and therefore it can react on the layman as medicinal doses, because it contains the transcendental activities of the Lord. There is no difference between the Lord and the literature. The literature is the factual literary incarnation of the Lord. So the layman can hear the narration of the activities of the Lord. Thereby they are able to associate with the Lord and thus gradually become purified from material disease. The expert devotees also can discover novel ways and means to convert the non-devotees in terms of particular time and circumstances. Devotional service is dynamic activity, and the expert devotees can find out competent means to inject it into the dull brains of the materialistic population. Such transcendental activities of the devotees for the service of the Lord can bring a new order of life to the foolish society of materialistic men. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu and his subsequent followers exhibited expert dexterity in this connection. By following the same method, one can bring the materialistic men of this age of quarrel
into order for peaceful life and transcendental realization. Thank you so much, Prabhu. So, इसमें जो नारद मुनि है वो क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है अनलिमिटेड है, और एक एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट किसे बताया कि जो रिटायर हो चुके हैं एक्टिविटीज से, मींस दोज हु आर नॉट हैविंग एनी मटेरियल अटैचमेंट आर डिजर्व टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, है ना. बट उसके पैरेलली भी यही बता रहे हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एवरीबडी इज नॉट एट दैट सिचुएशन, है ना, कि कहीं ना कहीं हर किसी का कोई ना कोई मटेरियल अटैचमेंट है. बट अगर कोई ये श्रीमद् भागवतम सुनता है ना, जो कि नॉन डिफरेंस है भगवान से, इसको बताया प्रभुपाद ने कि वो क्या है, लिटरली इनकारनेशन है भगवान का, ना. जैसे हम बोलते हैं कि भगवान की नाम रूप गुण महिमा में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये श्रीमद् भागवतम में क्या भगवान की महिमा है, तो उसमें उतनी ही पावर है जितनी की भगवान के अंदर है. तो अगर कोई उसके साथ एसोसिएट होगा, क्या होगा, उसकी प्योरिफिकेशन होगी, है ना. कि जब हम एक चीज से जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप एक कंटामिनेटेड जगह में जाओगे या फिर जहां महामारी फैली होगी, आप वहां जाओगे तो यू विल गेट इफेक्टेड बाय दैट वन, है ना, आपको वो बीमारी हो जाएगी. इसी तरीके से अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, तो अगर हम किसी ऐसी चीज से कनेक्ट होते हैं जो प्यूरिफाइंग है ना, तो वो क्या करेगी, उस जगह उस चीज को प्यूरिफाई कर देगी. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, सूरज है ना, सूरज जहां पर भी जो है रोशनी देता है, तो वो अगर बहुत ही फिल्दी जगह भी है तो उससे क्या कर देता है, वो साफ कर देता है उस जगह को. इसी तरीके से जब हम भागवतम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या होता है, इट प्योरिफाइज आवर हार्ट. और प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट मीन्स कि हमारी जितनी भी मटेरियल अटैचमेंट है वो धीरे धीरे जानी शुरू हो जाएंगे. और फिर उसके बाद प्रभुपाद एक बहुत, एक्चुअली अगर हम देखें तो प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन है, because Prabhupada is coming in the line of Chaitanya Mahaprabhu. जैसे प्रभुपाद कह रहे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड हिज सब्सिक्वेंट फॉलोअर्स, है ना, वो क्या करते हैं, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये चीज को, जो ये श्रीमद् भागवतम में उसको प्रेजेंट करते हैं. तो हम देख सकते हैं कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता था कि आने वाले फ्यूचर में तो इंग्लिश जो होगी बहुत ही पॉपुलराइज हो जाएगी एंड एवरीबडी जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज वेरी नाइसली. तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को इंस्ट्रक्ट किया कि जो है आप ट्रांसलेशन जो भी करें, जो बाहर के देशों इंग्लिश कंट्रीज में, बाहर के देशों में इसका प्रचार करें. प्रभुपाद ने he took so much of time and efforts to translate all the things in an English. ना, अभी ये क्या है, हमें इससे क्या हो रहा है कि हम जितने भी कॉर्पोरेट या बहुत हाई क्लास के लोग हैं उनको हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं कि यू कैन रीड दिस बुक. ना, आजकल के तो छोटे छोटे बच्चों को हिंदी आती ही नहीं है बिल्कुल भी. So by reading this book, which is written in English, translated in English, they can understand and connect with the God. ना, यहाँ पर ये बता रहे कि that is the, और उससे क्या हो रहा है कि they can go on the path of basically self-realization. So it's already 8:17. So we just stop the session here. If anybody wants to share or may ask, want to ask something or share, can share or comment what we did today for today's session. हरे कृष्ण माता जी, जैसे हम ये पढ़ते हैं कि श्रील व्यास देव भी भगवान के ही इनकारनेशन है. जी प्रभु जी. तो उन्होंने फिर, उनको पता नहीं था, जैसे नारद जी उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपने ये सब क्यों लिखा, एक्टिविटी, तो उनको तो पहले से ही पता होगा ना कि ये सब नहीं लिखना था डायरेक्टली श्रीमद् भागवतम. यस प्रभु जी. तो जैसे इसमें प्रभुपाद ने भी मेंशन किया कि जिस भगवत गीता में भी लिखा कि जो फ्रूटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना है ताकि वो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर चले. तो इसीलिए जो भी सारे ये वेदास और पुराणास लिखेंगे वो कैटेगरी वाइज लिखेंगे कि कर्म कांड के लिए जो कर्म कांड फॉलो करना चाहते हैं, ताकि वो सिंसियरली कर्म कांड फॉलो करते करते ज्ञान वाले पाथ पे आए और फिर ज्ञान से फिर दे कैन कम टू द भक्ति पाथ, है ना. तो इसीलिए उन्होंने ये सब किया. और एंड में बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि वो अपने गुरु को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं ना. मैंने ऐसे सुना था एक क्लास में, वो बता रहे थे कि क्योंकि व्यास देव तो शक्तावेश अवतार है भगवान के, तो बिकॉज ही वांट्स टू show that what is the relationship of spiritual master or what is the position of spiritual master, he behave like that कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें बस ये हो रहा था कि हाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ.
so that this conversation happens, so that this understanding happen. So that's why these things are happening. ना जो भी हम basically जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे even whatever Puranas and everything is there, they are like a drama, है ना, जिसमें सब कुछ चीजें होती हैं, but at the back जैसे वो बोलते हैं कि एक ड्रामा है और साथ में क्या होता है, एक एजुकेशन होती है. तो इसी सिनेरियो में यही है कि एक रिलेशनशिप बिटवीन a spiritual master and a student is shown also through this pastime. This is what my understanding. Yes, Mataji. Explained really nice. Thank you. Like same condition with the Arjuna, है ना, कि वो भी he was already लेकिन भगवान की शुद्ध भक्त है वो, है ना, और नित्य दास है भगवान के, but he got bewildered. अगर वो bewildered नहीं होते तो how we get the भगवद गीता basically, क्योंकि भगवान ने उनको bewildered होने के लिए प्रेरित किया तो वो bewildered हो गए. Then he gave his instruction for the Bhagavad Gita basically. Thank you, Mataji. Shri Krishna. Okay, end the session here by saying Pranam for Srila Prabhupada and Nama Om Vishnu Padaya Pushpishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namani Namaste Saraswati Devi Gaurivani Pracharine Nirvishesha Sharnyavadi Paschata Deshita Jagat Guru Shri Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji.